As in the previous class, I have discussed with you this one. I told you the appendicular endoskeleton, girdle bone and limb bones. Girdle bone में pectoral pelvic होता है. Pelvic pectoral girdle is otherwise called as shoulder girdle. Core bone होता है clavicle, collar bone, that is 2, and scapular shoulder blade, that is 2. And pelvic girdle, hip girdle, that is with the 2 innominate or coxal bone, the fusion of ilium, ischium and pubis. And in दोनों के बीच में, दो pubis के बीच में जो present है cartilage, that is called as what ना pubic symphysis. पढ़े हैं? That pubic symphysis is formed of fibrous cartilage. And during the paturation of the baby, in case of pregnant women, during the childbirth or paturation, under the influence of hormone relaxin, hormone, this pubic symphysis will soft. The softening of the pubic symphysis under the influence of relaxin gives rise to helps in the paturation. And that is why relaxin is also called as birth hormone, along with oxytocin also. समझ में आया? बाकी यहाँ पे 3-4 पॉइंट ऐड करना है. Let's come. Scapula, extended on dorsal side, in between second and seventh rib. ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम इससे क्वेश्चन उठाता है. डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये जो स्कैपुला बैक साइड में है कि नहीं, ये तो क्लेविकल हो गया. बैक साइड में क्या है? स्कैपुला. स्कैपुला नीचे की तरफ एक्सटेंडेड हुआ है. अब देखेंगे ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे. तो कहाँ पे ब्लेड, ये कब तक ये एक्सटेंडेड हुआ है? ये एक्सटेंशन ऐसे हुआ है नीचे की तरफ. दैट एक्सटेंशन इज इन बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ. बुक है ना? बुक है तो निकालिए. एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी भी निकालिए, जो मर्जी आपको एक निकालिए कोई भी. स्केलेटन देखिए, स्केलेटल स्ट्रक्चर देखिए, पेज नंबर 20. फटाफट निकाल के देखिए. स्कैपुला देखिए बैक साइड में, देखिए नीचे की तरफ एक्सटेंडेड हुआ कि नहीं. एंड वो डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है. ये एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है, इसलिए वो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है. स्कैपुला बैक साइड में देखिए एक्सटेंडेड हुआ है इन बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स. नेक्स्ट, scapula has two processes. One is acromion process. Another is coracoid process. Acromion process, that is articulate with clavicle. Whereas coracoid process articulate with tendon. प्रोसेस का मतलब क्या है?
जैसे कि न्यूरॉन्स का दो प्रोसेस होता है, एक है एक्सॉन, दूसरा है डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट। मतलब सेंट्रल पार्ट को क्या हो गया, साइटोन। तो एनी सेंट्रल पार्ट gives rise to branching of structures or extension of structure is called as what the processes. So any extended structure is called as what the process. So scapula is the main part. The scapula contains two extended structure called as acromion process and coracoid process. Acromion process देखिए यहाँ पे, ये आपका शोल्डर है, आप हाथ लगा के देखिए, यहाँ पे हाई पॉइंट आपको दिख रहा होगा, फील हो रहा है। This high point is called as what na acromion clavicle joint. This is called as what? The high point of shoulder, acromion clavicle joint. So acromion of scapula along with the clavicle. Clavicle तो सामने गया है, स्कैपुला तो पीछे है, तो उसका एक एक्सटेंशन किसके साथ बाइंड किया है, स्कैपुला क्लैविकल के साथ। दूसरा एक्सटेंशन कोराकोइड प्रोसेस किसके साथ लिंक किया है, टेंडन। तो एक्रोमियन क्लैविकल जॉइंट, हाई पॉइंट ऑफ शोल्डर। High point of shoulder is called as acromion clavicle joint. Clear है? प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था, एक एक ग्लेनोइड कैविटी, दूसरा है एस्टिबुलम, याद है? कॉप्सेप्ट, डिप्रेशन of scapula called glenoid cavity fit with head of humerus. इस जॉइंट का नाम क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा कि नहीं, एंड दैट इज द शोल्डर जॉइंट। Shoulder joint is a type of ball and socket joint. वैसे ही another concept, depression, present in the pelvic girdle is called acetabulum. That fits with head of femur, and that also form a ball and socket joint called as what, hip joint. Hip joint is because the fitting of glenoid cavity with the head of humerus, whereas the shoulder joint is between the glenoid cavity and head of the humerus, whereas the hip joint is between the acetabulum and head of femur. Both are ball and socket joint. बॉल एंड सॉकेट मतलब एक बॉल होगा एक सॉकेट होगा, यहाँ पे सॉकेट मतलब डिप्रेशन, बॉल मतलब हेड ऑफ ह्यूमर एंड ह्यूमर हेड ऑफ फीमर. The head of femur, humerus and head of femur, these are actual what ना ball set. इसमें कोई दिक्कत है? So next we are starting the next topic of this chapter. That is joints.
The joint is actually the point of articulation. Point of articulation of two bones. Two or many bone भी लिख सकते हैं. Two or more bone is called as joints. So joints is the articulation point in between two bone or in between more than two bone. दोनों हो सकता है, two or more bone. एक दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है. First we are coming to number one. Fibrous or immovable or fixed or synapse joint. The scientific name of the immovable or fibrous joint is called as synapse. तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड और इमूवेबल, तो ये मूव नहीं करेगा. डिटेल्स बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है. So it is fixed, so it is not movable, immovable. Why it is called as fibrous? Because the fiber, white or collagen fibers are present in between the two bone or articulation point. The white collagen fiber strong होगा कि soft होगा, tough होगा, strong होगा, inelastic होगा. So it is fixed. So in between the two bone, articulation point. What is present? Now white or collagen fibers are present. And that is why it is called as fibrous. And so it is immovable, fixed and strong हो जाता है. Example दे सकते हैं, that is your suture, that is cranial joint. The joint between the cranial bones is called as what? Na suture. जैसे कि ये cranial bone है, ये एक दूसरा cranial bone है. तो यहाँ पे दो cranial bone के बीच में ये जो आपको क्रैक मार्क दिख रहा है ना, वही है suture. Second है in between, yeah, that is teeth and bony socket. Bony sockets are present in the maxillary bone as well as mandibular bone. Maxilla upper jaw and mandible क्या है, lower jaw. दोनों तो bone है. उसके साथ जो teeth का attachment है, that is called as what? Comphosis. So comphosis is also a strong bone, sorry, strong joint, immovable joint. Number two. Cartilaginous or slightly movable or imperfect or amphiarthrose joint. So here actually, as the name, it is slightly moved. Why it is so? Because white fibrous cartilage present
at articulation point. तो आर्टिकुलेशन पॉइंट में यहाँ पे प्रेजेंट क्या है ना, व्हाइट फाइब्रस कैटलेज। एंड व्हाइट फाइब्रस कैटलेज आप लोग पढ़े थे विथ लेस इलास्टिक फाइबर, याद है ना, कि मोर इलास्टिक फाइबर। व्हाइट फाइब्रस कैटलेज में व्हाइट फाइबर ज्यादा होगा, येलो फाइबर क्या होगा, कम होगा। तो क्योंकि लेस इलास्टिक फाइबर है इसलिए स्लाइटली मूवेबल है। एग्जांपल आप लोग रेस्पिरेशन के टाइम में, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यू नो ब्रीथिंग, द मूव दैट इज मूवेबल डायफ्राम, मूवेबल रिब्स, मूवेबल स्टर्नम, यस और नो, वर्टिब्रल कॉलम, thoracic cavity, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज करता है कि नहीं, डिक्रीज करता है कि नहीं, मींस these are slightly movable or freely movable during the breathing। डायफ्राम तो हो गया मस्कुलर, बाकी रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम ये सब तो बोन है, तो ये स्लाइटली मूवेबल होगा कि नहीं। इन बिटवीन वर्टिब्रे और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्लस अभी हम बात कर रहे थे प्यूबिक सिम्फाइसिस, pubic symphysis in between the pubis bone। These are very slowly motile or mobile, so it is slightly movable। Number 3, synovial or pre-movable or perfect or diarthrose joint। तो जैसे वहां पे सिनार्थ्रोस था, यहाँ पे हो गया एम्फिआर्थ्रोस, दैट इज द cartilaginous joint is otherwise called as amphiarthros, the scientific name। Like your diarthros is the scientific name of synovial joint। So we need to go for the typical diagram of this। ये दो बोन को कनेक्ट कौन करता है, लिगामेंट। ये जो मैंने पेंसिल में किया ये लिगामेंट है, होल्डिंग द टू बोन्स।
This is the bone. This is the bone marrow cavity. This is the ligament. This is synovial membrane. This is the synovial fluid present within the synovial cavity. And this is the end of the long bones are present with which type of cartilage? Hyaline cartilage. As it is present in between the articulation point, so called as articular cartilage. So articular cartilage is hyaline cartilage. Synovial cavity with synovial fluid and synovial membrane that secrete synovial fluid. So synovial fluid secreted by which membrane? Synovial membrane. And it is deposited in the synovial cavity. And ये जो synovial fluid है ये oily है. So it is present in between the two articulated bone and that act as what? Synovial fluid का function क्या होगा? Synovial fluid का function क्या होगा? Lubrication. Prevent the friction or leads to friction? The frictionless movement in between two. शॉक एब्जॉर्बर के भी काम करेगा. Ultimately, synovial fluid acts as a protective fluid. Okay. So this is the diagram of a typical synovial joint. And typical का मतलब मैं बताया था almost similar. याद है? This type of joint is common to all type of synovial joint. Diagram. Coming to the types of synovial joint. Great. Yes, sir. Yes, sir. Can I next page? Yes, sir. So types of synovial joint. Number one. Ball and socket joint. तो कैरेक्टर अगर देखें तो एकदम 2-3 सेंटेंस में एक एक कंप्लीट करते हैं. मोस्ट फ्री जॉइंट.
तो मूवमेंट यहाँ पे क्या होगा, ऑल डायरेक्शन होगा कि नहीं? ऑल डायरेक्शन मूवमेंट मींस 360 डिग्री. End of one bone is ball cell. End of another bone is comp or depression. Comp set better लिखिए. एग्जाम्पल अभी हम बात किए थे शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. सेकेंड इज हिंज जॉइंट. So that is actually direction in one plane. One plane दे दिया मतलब 180 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. And that is actually end of one bone is deep convex and another bone is deep concave. So end of bone, one is deep convex, another is deep concave. An example क्या हो जाएगा हिंज जॉइंट का? एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट. Number 3, pivot joint. पाइवट जॉइंट में रोटेशन होगा. यहाँ पे रोटेशन होता है. मैंने समझाया था ना, नो मूवमेंट. तो एंड ऑफ बोन, one bone is pointed. एक पॉइंटेड एंड है तो दूसरा क्या होगा, सैलो डिप्रेशन होगा कि नहीं? So one end is pointed or we can say it is rounded and another end is shallow depression and उसके वजह से मोटिलिटी होगा इन द रोटेशन. एग्जाम्पल एटलस एक्सिस and second is between radius and ulna just below elbow. Supposed to be ये देखिए मैं आपको हाथ ऐसे नीचे किया हूं, मेरा ये एल्बो है, एल्बो के नीचे क्या है, रेडियस अल्ना है कि नहीं? तो मैं ऐसे सीधा कर दिया. ठीक है, रेडियस अल्ना को ऐसे मूव किया तो ये मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, जी बिलो द एल्बो हो रहा है कि नहीं? जस्ट बिलो द एल्बो between the radius and ulna. This one, this is the radius
एंड दिस इज अल्ना। थिन कौन है, थिक कौन है, दिखाई देना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। सैडल होता है। So in between the radius and ulna, just below elbow, that is also a pivot joint. Number 4, we are coming to the gliding joint. Gliding joint, movement is side to side. मूवमेंट यहाँ पे क्या होगा, साइड टू साइड होगा। यहाँ पे कोई रोटेशन वगैरह नहीं होगा। रोटेशन जैसे होता था ना, पॉइंटेड एंड डिप्रेशन के बीच में यहाँ पे रोटेशन हो रहा था, बट हियर देयर इज नो रोटेशन, ओनली द मूवमेंट इज साइड टू साइड। सो मूवमेंट इज साइड टू साइड। The end of both bone is either flat or slightly curved. Either flat or slightly curved. अब देखिए, ये सपोज टू बी एक बोन है, ये दूसरा बोन है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे हेड क्या हो गया, फ्लैट होगा कि नहीं? नहीं तो ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, तो दोनों का थोड़ा सा कर्व हुआ कि नहीं? This type of bone joint will be slightly, that is glide over each other or slide over each other. रोटेशन तो नहीं होगा ना, या तो ग्लाइडिंग होगा या तो स्लाइडिंग होगा। स्लाइड ओवर, ग्लाइड ओवर ईच अदर। एग्जांपल, कार्पल जॉइंट मतलब रिस्ट जॉइंट, टार्सल जॉइंट मींस ankle joint, and also zygapophysis. Zygapophysis in between vertebrae. जाइगोपोफाइसिस मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि लंबर एंड सैक्रल के बीच में, बड़े तरह लंबो सैक्रल जॉइंट, वहां पे लंबर एंड सैक्रल के बीच में जो जॉइंट है, दैट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो जाइगोपोफाइसिस बिटवीन द वर्टिब्रे, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द ग्लाइडिंग। नंबर 4, sorry, number 5, saddle joint. So it is ultimately, we can say, miniature of ball and socket joint. मतलब इसमें जो भी कैरेक्टर है, that is related with what ना, ball and socket, but it is mini form of ball and socket. What is the explanation for this? One end is ball shape, another end is cock shape. Just like ball and socket, but it is mini form of ball and socket. Example, between carpal and metacarpal of human thumb. खाली थंब लिखने से नहीं होगा,
ये देखिए, ये तो थंब का 2 बोन हो गया, डिजिट बोन। नीचे क्या है? मेटाकार्पल है, किसका? थंब का, क्योंकि 5 मेटाकार्पल है, 5 मेटाकार्पल्स। This is the metacarpal belongs to what? The thumb, connected with the what? Carpal. So metacarpal and carpal of thumb, that is saddle joint, and it is 360 rotation, but mini form of ball and socket. The last number 6. Spondyloid joint or angular joint or ellipsoid joint. यहाँ पे जो रोटेशन होगा बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड होगा। Here also there is no rotation. The bone end, one end is deep convex, one end is deep convex, and another is elliptical or concave. Convex भी हो सकता है, oval shaped भी हो सकता है. Another is concave or elliptical end. So deep convex and another is concave or elliptical end is called as ellipsoid joint. इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देंगे? एक तो atlanto-occipital joint याद है? That is yes movement. Second, metacarpophalangeal joint. The joint between the metacarpal and phalanges is called as what? Metacarpophalangeal joint. Third is metatarsophalangeal joint. Means here the joint is in between what? Now metatarsal and phalanges. Metacarpal मतलब wrist. मतलब यहाँ पे हाथ में जो जॉइंट हो गया ना, इन बिटवीन द डिजिट एंड मेटाकार्पल, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये जो जॉइंट है ये बैक एंड फोर्थ होता है, साइड टू साइड भी होता है। तो साइड टू साइड मूवमेंट होगा एंड आगे पीछे भी होगा, बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड। आप बोलेंगे सर रोटेट भी कर रहा है, भाई ये रोटेशन नहीं है। तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, लाइकवाइज मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट प्लस the joint between radius and carpal. Joint between the radius and carpal, that is also the joint comes under the angular or ellipsoid joint. याद रखना सिर्फ और सिर्फ examples. Which joint comes under which category? This is the question. अरे समझ में आया? Good. We are coming to the next. Complete है? Yes, sir. Coming to the lever system.
देखिए एनी टाइप ऑफ मूवमेंट of body part, any type of movement of body need what na bone, need what na joint and muscles. Bone act as lever, joint act as fulcrum, and muscles act as effort. And movement itself act as a resistance. Fulcrum stands for F, E stands for effort, and R stands for resistance. Arrangement of F, R, and E gives rise to either first class lever, second class lever, third class lever. जैसे कि फर्स्ट क्लास लेवल में पहले देखिए फिर उसके बाद लिखेंगे। मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, साइड करके खड़ा रहता हूं तो आपको समझ में आए। दिस इज एक्चुअली व्हाट द हेड, मेरा हेड अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं ऐसे, मेरा यहाँ पे मोच आ गया, मैं इसलिए मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत पेन फील हो रहा है मुझे, लिखने में और देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सपोज टू बी हेड को अप एंड डाउन ऐसे कर रहा है, राइट। दिस इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, दैट इज आर। तो ये हो गया आर। बैक साइड में क्या है, मसल्स, नेक मसल्स। तो मसल्स इज दैट इज व्हाट ना ई, दैट इज एफर्ट। एंड स्कॉल एंड एटलास वर्टिब्रे के बीच में क्या है ना, एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट, दैट इज फल्क्रम। तो सीरियली क्या हो गया ना, आर देन जॉइंट एफ देन मसल्स ई। तो सीरियली क्या हो गया, आर एफ ई, then it is called as first class liver. So types of the your liver on the basis of what, arrangement. जैसे कि फर्स्ट क्लास लिवर का एग्जांपल क्या हो गया ना, मूवमेंट ऑफ हेड सीरियली क्या है ना, आर then represented by then F, and then it is what na E. Example, movement of head or yes movement. डायग्राम बुक्स में है, देख लीजिएगा, बहुत जरूरी नहीं है, आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। सेकेंड क्लास लिवर, देखिए आप वॉक कर रहे हैं, वॉक सपोज टू बी, ध्यान रखिए, सपोज टू बी आपका लेग हो गया, मान लीजिए, ठीक है। तो सपोज टू दिस इज द फिट एंड ये टो हो गया, टो के ऊपर हम लोग का पूरा भार आ जाता है कि जब हम वॉक करते हैं, दैट इज एक्ट एज ए फल्क्रम। ठीक है, मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, ई, मूवमेंट इसका हो रहा है कि नहीं, व्हाट सीरियली क्या हुआ, एफ आर ई, क्या हो जाएगा, सेकेंड क्लास लेवल। एग्जाम्पल,
foot movement during walking. And the third class is, see here, अब मुझे देखिए, ये देखिए आर्म है ना आपका, ये जो मसल सामने है ये बाइसेप मसल है, दिख रहा है? पीछे साइड में कौन सा मसल है? ट्राइसेप मसल. बाइसेप मसल एक्चुअली फ्लेक्सर मसल है. फ्लेक्सर मींस that particular muscle which gives us the bending of body part. Bending of body part due to the muscle contraction is called as flexor. Extension of the body part is called as what? Na extensor. The bicep muscle contraction leads to bending or extend. तो flexor हो गया. And tricep muscle क्या है? Extensor. Both these two are opposite in nature. Antagonistic. जैसे upper jaw muscle and lower jaw muscles. Antagonistic है. हम पढ़ेंगे और एक एंटागोनिस्टिक नर्वस सिस्टम. तो हियर क्लियरली देखिए, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द हैंड. तो ये आर्म हुआ कि नहीं? मसल्स पहले है कि जॉइंट पहले है? नी जॉइंट पहले आता है कि मसल्स पहले आता है? मसल्स पहले आता है. देखिए ना, बाइसेप मसल की बात कर रहे हैं हम, ट्राइसेप मसल की बात नहीं कर रहे. ठीक है ना? बेंडिंग ऑफ द आर्म इज बिकॉज़ ऑफ बाइसेप और बिकॉज़ ऑफ ट्राइसेप. बाइसेप आगे आएगा कि जॉइंट आगे आएगा? जॉइंट तो पीछे की तरफ है. तो सीरियली क्या हो जाएगा? आर ई एफ, आर ई एफ. थर्ड क्लास होगा. ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, खाली थोड़ा सा आइडिया दे दिया. हाँ, सोच रहा था कि नहीं आऊंगा आज, फिर याद आया कि भाई पढ़ाना तो किसी को पड़ेगा ही. देखते हैं कितना सही जाएगा. क्लास में घुसने से समझ में नहीं आता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट खराब हो गया. देखो सुबह से चल रहा है 9 बजे से नॉन स्टॉप. जैसे ही मेरा आज कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना खराब हो गया है, मैं अपना बॉडी मूव कर रहा है तो नेक भी मूव कर रहा है. आज नेक रोटेशन बंद हो गया है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. डिजिटल डिजिटल के अंडर फर्स्ट आते हैं. डिजिटल रिलेटेड टू muscles. Disorder related to muscles. So number 1, myasthenia gravis. Myasthenia gravis. First of all, it is a autoimmune disease. It's an autoimmune disorder where the antibody attack the acetylcholine receptor protein. And acetylcholine receptor protein कहाँ पे प्रेजेंट था? sarcolemma, याद है ना? So it attacked the acetylcholine receptor protein present on sarcolemma. And as a result of this, what will happen? The acetylcholine receptor protein will unable to bind with the acetylcholine secreted by the nerve ending, and the muscle contraction will not properly initiate. So that leads to weakening of muscles, and that leads to what? Not paralysis. बस इतना ही याद रखना है कि मैकेनिज्म क्या है.
एंड सिम्टम्स ज्यादा नहीं आता है, फिर भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं. Weakening of muscles and paralysis. What is the treatment? What is the treatment? So treatment by injecting acetylcholine esterase inhibitor. What actually to be injected to the patient? पेशेंट को जो इंजेक्शन दिया जाता है उस इंजेक्शन में होता है क्या है? Acetylcholine esterase inhibitor. Try to understand. This is the acetylcholine which is being break down into acetate plus choline in presence of the enzyme called as acetylcholine esterase. इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ACHE. So what is the enzyme which is break down the acetylcholine into acetate plus? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो acetylcholine esterase inhibitor है वो किसको इनहिबिट करेगा? esterase को इनहिबिट करेगा कि नहीं? अगर acetylcholine esterase inhibit हो जाता है then breakdown process will slow down. If the breakdown process gets slowed down, then accumulation of the more acetylcholine will be there. If the more acetylcholine will be remain present or added in the neuromuscular junction, then binding efficiency of acetylcholine with the acetylcholine receptor protein increase or decrease? Increase. Increase करने से क्या होगा? Muscles का जो weakening है, जो paralysis है थोड़ा सा partially ठीक होगा कि नहीं? हमेशा remember, हमेशा याद रखना कि कोई भी autoimmune disease, any autoimmune disease, there is no known cause. There is no known cause for any type of autoimmune disease. So almost we can say autoimmune disease to be caused due to unknown cause. So as it is unknown, we cannot cure it. We just can suppress the symptoms. Clear है? चलिए. Number 2. पढ़े थे हम लोग डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, याद है? Dystrophin protein is necessary for the transport of the impulse from the sarcolemma through the T tubules into sarcoplasmic reticulum. याद आया? Disease is called as muscular dystrophy. Muscular dystrophy is a genetic disease. क्योंकि जेनेटिक डिजीज में क्या होता है ना, पर्टिकुलर डीएनए विल और पर्टिकुलर जीन विल बी एब्सेंट, लगी नहीं? डिफेक्टिव जीन हो सकता है इन प्लेस ऑफ फंक्शनल जीन. तो यहाँ पे डिफेक्टिव जीन क्या करता है ना, नॉर्मल डिस्ट्रोफिन प्रोटीन विल नॉट फॉर्म. एंड डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अगर फॉर्म नहीं होगा, इसका ये इंडिकेशन है कि द स्पेसिफिक जीन फॉर द डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज एब्सेंट. मींस इट इज ए जेनेटिक डिजीज. Here the genetic disease in which the dystrophin protein will be absent. So weak muscles and paralysis. Disease number 3. Muscular tetany. Lockjaw.
ऑल्सो यहाँ पे हो जाएगा। Yes. Calcium is necessary for the muscle contraction. Muscle contraction will be called as normal when it is one contraction and one relaxation. Due to usual stimulus or unusual stimulus? Usual stimulus. And usual stimulus आएगा तभी muscle का contraction proper होगा. And usual stimulus is due to normal concentration of calcium. अगर कैल्शियम कम हो गया प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम कम हो गया, तो unusual stimulus will create in place of usual stimulus, and that gives rise to the muscle will start contract, but not proper relaxation will caused, so that the muscles will be in the contracted stage for long time. तो ये involuntary हुआ कि मतलब sudden हुआ, involuntary हुआ, that को scientifically हम लोग क्या बोलते हैं ना, spasm. What is the technical word to be used for the tetany? Rapid spasm of muscles due to less calcium की, normal calcium की more calcium, less calcium. Rapid spasm muscles due to less calcium in blood is called as tetany. इसके बारे में डिटेल्स में अभी बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये जो टिटानी है डायरेक्टली रिलेटेड विथ व्हाट ना, हाइपोकैल्सेमिया ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन, याद है? दैट इज व्हाई टिटानी को हम लोग मस्कुलर टिटानी भी बोलते हैं, पैराथायरॉइड टिटानी भी बोलते हैं. पैराथायरॉइड टिटानी मींस डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन? पैराथायरॉइड. ठीक है, तो टिटानी सिंपल कॉज है कैल्शियम डेफिशिएंसी. वो क्यों होता है वो डिपेंड करता है. अगर पीटीएच का डेफिशिएंसी से हुआ तो पैराथायरॉइड. क्लियर है? नंबर कंप्लीट हो गया हम लोग का. कौन सा हेडिंग क्या दिए थे? रिलेटेड टू मसल्स. कंप्लीट है. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू रिलेटेड टू जॉइंट. रिलेटेड टू जॉइंट नंबर बी. बस यहाँ पे एक ही डिजीज है मेनली, दैट इज आर्थराइटिस. आर्थराइटिस देखिए ITTS जहां पे लिखा होगा ना उसका मतलब है इन्फ्लामेशन. हम लोग बार बार पढ़े ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, आर्थराइटिस, ओस्टियोफाइटिस, यूराइटिस, गैस्ट्राइटिस पढ़े हैं. जहां पे भी लिखा होगा ITTS मतलब ये इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन व्हाट? जॉइंट. Inflammation of joint. And inflammation is a word which is related to a mass or a group of conditions or group of symptoms. Inflammation में क्या होता है ना? swell, redness, heat and pain. The swelling of joint, redness of the joint, heat generate होगा and pain feel होगा. So leads to what? Mobility or immobility? That leads to immobility of the bone, the joint. So inflammation of joint leads to immobility is called as what? Arthritis. Different type of arthritis are there. जैसे कि फर्स्ट आते हैं gout arthritis. gout arthritis में सिंपल में कॉज लिख के स्किप करूंगा, ठीक है?
That is due to accumulation of uric acid crystal. क्रिस्टल होगा कि नहीं? यूरिक एसिड insoluble in water. पढ़े हो? The uric acid crystal in synovial cavity. तो synovial cavity में अगर deposit हो जाएगा ये, then that leads to immobility. Number B. Osteoarthritis. Ossification of articular or hyaline cartilage in joint. अब सोचिए, अगर ये हाइलिन कैटिलेज जो आर्टिकुलर कैटिलेज है वो अगर ऑसिफाइड हो गया, मतलब न्यू बोर्न फॉर्म हुआ कि नहीं? Ossification of the hyaline cartilage or articular cartilage in the joint gives rise to the formation of new bone. Then that leads to immobility. Then it is called as osteoarthritis. ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द रिमॉइटेड आर्थराइटिस. बड़ा लंबा है इसलिए छोड़ दिया. बाकी इसको कंटिन्यू करके नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट क्या करेंगे? थोड़ा सा टॉपिकली बचा हुआ है, ये कंप्लीट होने के बाद नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे. ठीक.